Uteja, I'm still waiting for you. Uteja, will you at least reply to me what's happening? Why you have not turned the video on? Uteja, you're not in the class. Yes, Uteja, tell me. This is now how you attend classes, not speaking anything, not like anything. Right question, please. Identify the functional group, unsaturation, and parent in the following. Have we done this type of question? Just let me see. We have not done. Fine. Izan, I think your camera is not working. Why is your camera not working? And when you will get it corrected? Yes, Izan. Okay. Tell me, Izan, jaldi बताएं. When is your exam? Okay. Okay. I'm giving you guys a chance. Do I need to explain any one of them? If you want me to explain any one of them, please let me know in 10 seconds. You can see the questions, you can write the questions. You have 10 seconds to select a question that I will explain. Guys, quickly, I mean, the 10 seconds are already over. You cannot decide what question to ask. Fine. I hope you guys can do all of these 4 questions. You have 4 minutes of time. Chali, please start. What you need to do is you need to identify unsaturation functional group in the following and parent in the following.
You will send the answers on my WhatsApp once you are done. Okay. Guys, your time is over. Can you please send the answers on my WhatsApp, whatever you have done? Rishita, Izan, and Khudeja, please send your answers, whatever you have done. Guys, if you're doing, please stop doing and send the answers on my WhatsApp. It has been 1 minute since I have been asking for answers. I have not got even one answer. I send you the one answer. Just got it. Just got it, Rishita. Achha, you're not sure about the parent chain, Rishita? Yes, sir. I tried, I revised it, but I still didn't get. I was confused about what the parent. Just a second. Okay, no problem. We will we can discuss that. Okay. Izan, I'm asking you, why I have not got your answer? Izan, why I have not got your answer? Why you don't know how to do? Turn your mic on. Turn your mic on, Izan.
Izan, turn your mic on. You want me to say everything thrice? Huh? Yes or no? Izan, what happened? Why you are not speaking, huh? You are not going to speak anything? You're free to leave my class, please. Khudeja. Khudeja, why I did not receive your answer, Khudeja? Izan, please leave my class and watch the recordings if you have not attended the classes. If you are attending the class, there is no use of attending the class if you have not done the previous classes. Okay. Please leave my class and go watch the recordings. Khudeja, please turn your mic on. Khudeja, please. Okay, fine. Khudeja is also not here. Listen. So in the first case, Rishita, what is the functional group? Tell me. Carbonic acid. Oic acid, correct. So just wait a second and I will just change the background and all. Okay. Functional group is COH, that is why it will be oic acid. Assalamu alaikum, Khadija. Am I audible? Khadija, can you please turn your mic on? So we have double bond, then it will be EN, right? Correct, Rishita? So for the ठीक third है. one, instead of I wrote all, but it should be. नहीं, just leave that. नहीं, third one बाद में देखेंगे. Let's focus on first one. You will not say anything. Okay. Let's focus on the first one. Third वाले को बाद में देखेंगे. ठीक है. So unsaturation is double bond. Then हाँ चलिए ठीक है. Parent में आपने क्या लगा? Like what concept you said. Tell me. कैसे start करेंगे? Yeah, let's check if there's a double bond. नहीं, जोर से बोले please. I cannot hear you at all. Speak loudly. If there's a functional group, double bond, triple bond, or largest chain. नहीं, ऐसे नहीं. एक करके ना. You have to first. What is the first line? Read that ना. What is the first line? Functional group. नहीं, first line वो है ही नहीं. When I'm talking about the parent chain, is that I have directly written functional group or what? No, parent chain should be as long as possible, terminal to terminal, but make sure. Yes, wait a second. Wait. Now you have to see what are the terminals, right? Yes, sir. First thing is you have to see. You have to be slow in order to be correct. Okay, Rishita, initially. Here, slowly what will happen? वो आपकी आंखें खुद, I mean, as you can know, you don't have to think when you have to say functional group. Correct, Rishita? Keep your mic on. Please keep your mic on. Don't turn it off. Do you have to keep your mic on, Rishita? Do you have to think when you have to identify the functional group? Tell me now. No, it comes quickly, right? So slowly, when you have to identify the double bond, triple bond, you don't have to worry. Similarly, for parent also, you have to do a bit more practice और वो आ जाएगा. But still, for initially what we will do, जैसे देखिए, जब हम लोगों ने functional group start किया था, तो C double bond में confusion होता था ना? Yes. Right? So we should go slow. कि C double bond O वाले carbon को देखा, उसके right side वाले में देखा, left side वाले में देखा, and then we decided what is the function. So here we'll go slow and we will identify the terminals. I hope you will not have any problem in identifying the terminals. This is my terminal A. This is also an end of terminal, right? This is the carbon atom here. This is B. This is C, and this carbon atom here, this is B. Correct? Yes or no? Please tell me. Yes. Now, my parent should start from which terminal carbon? Tell me. A. No. अब आपको ये करना पड़ेगा. नहीं. अब आपको ना वो टर्मिनल के बाद वाला पढ़ना पड़ेगा. हाँ. टर्मिनल से टर्मिनल जाना. कौन सा टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे? Functional group D. हाँ. तो हाँ समझ देखिए. बिल्कुल साफ है या नहीं है? If you go step by step. Yes, sir. है ना? ठीक है. अब देखिए. So we will move on like this. Now I will go towards B, right? Because I have to also include B. I hope you know that. Yes or no? Yes, sir. है ना? I will go towards B like this.
Yes, sir. Now tell me, how many carbon atoms are here? Now there is no, you have started from a terminal, you ended up at a terminal also, right? So it will be like 1, 2, 3, 4, and 5. So we are having 5 carbon atoms here. Yes, sir. And this will be what pent. Izan, I hope you can see that I'm taking a class. Please message Learnivio. And if you don't get any link in 10 minutes, message them again. If you don't get any link in 10 minutes, message them again unless you get the link. Okay? So please message on the Learnivio's WhatsApp number to get the recorded lectures. Okay. Atija, I asked you something. Why are you late? Atija, can you please turn your mic on? Yes, sir. You must have, आपके पेरेंट्स किसी के पास होगा, you should have those things. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले देखिए. In the next one, please tell me, for what is the functional group? OH. OH. Khadija, please turn your cameras on. This will be OH, so it will be all. Khadija, please don't let me say it one more time. Turn your cameras on. Third, Unsaturation. Sorry, what, Khadija? third today, can I know something? I learned it from next class. Why? I do. Camera. Sorry? Camera is not working. Turn it on. Keep it black. No matter. Doesn't work. It doesn't work. You can turn it on though. And why are you late, Khadija? Sorry? What? Okay. Maghrib. So see, so unsaturation will be what? Prishita, tell me. AN, right? We don't have anything, so it will be AN. Now, obviously, we should start from the carbon atom, which was there in the, we'll start from here. And this whole thing will be our, because obviously there is no terminal here, right? So you have to take the complete ring. So our parent carbon chain, it is a ring of 6 carbon. So for ring, I will add the word cyclo. For 6 carbon, I will add the word hex, cyclohex. Make sense, Rishita? Yes, Rishita, make sense, yes or no? Yes, sir. Now for the next case, PC, we have the functional group. That is, tell me what is the functional group? Or ketone. नहीं, गलती कर दिया आपने. This carbon atom, is it connected to anything? आप screen में देखिए. Keep your mic on and please keep, why you are turning a mic off? Yes, sir. It's connected to OH. So it will be what? Alcohol. Alcohol क्यों होगा भाई? Yeah. अरे आप नहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप तो लग रहा है. ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है रिशिता? Yes, sir. What will be the unsaturation? Double bond. I mean, EN. EN. ठीक है. Now, this is an important point. ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सीखने को मिलेगा. Double bond है. That will be EN. And if you talk about the parent, ठीक है. Now, parent की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको क्या चीज सीखने को मिलेगी? देखिए, we'll start from this carbon atom and we will go towards the double bond, right? So you can see here something that we are not including the triple bond in anywhere, right? Because this double bond and double bond and the functional group are in one chain and the triple bond is in another chain. So this is very rare that you are going to find it. Very rare. But एक बार आप हमने एक example करा दे so that you know what, and you will not be confused when this happens. So when you have double bond and a triple bond, when you have double bond and triple bond in different branches, when you have double bond and triple bond in different branches, and there is a functional group somewhere, so functional group वाले को लेके चलना ज़्यादा important है, and then we will move towards the double bond. ठीक है, उसके बाद triple bond की बारी आएगी. So parent is going to be 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, and 6 carbon atoms. For 6 carbon atoms, it will be what? Hex.
The functional group here, it is equal to amine. It is NH2. So it will be amine. Then the unsaturated is double, and the parent is quite simple in this case. You will start from the NH2 and then you will just move on like this. So this is going to be 5. It is a ring of 5 carbons, so it will be cyclopent. Pent. Yes, sir. Let me know, Rishita, once you're done. Let me know. Yes, sir. Izan, did you message? आप अपने फादर से नंबर ले लें भाई. आप लोग को जब लिंक मिलती है क्लास आने की, you don't attend the classes, right? So please ask your dad or ask your mom about the number. हाँ, ठीक है. Please message them and watch the lectures. And now this Khadija is not answering anything. I don't know why she attending the classes. हाँ, Rishita, हो गया क्या? Yes, sir. चलिए ठीक है. Write some more questions, okay? Write some more questions. You cannot be doing, I mean, write the question, identify the parent. हाँ, it's fine, but आप lecture तो देख के आते. If you are not attending the classes, then you have to make up some time na and watch the lectures. Identify the parent. Unsaturation. अच्छा, same thing है, आपको हम सिर्फ सवाल दे देते हैं ना. The question is same. I'm giving you guys 5 minutes. After 5 minutes, you will send the answers, and then I will give you again some time. Okay. Those who are doing this question.
Izan, if you've got the numbers, if you got the link, please watch the lectures. Okay, you can call that number also if you can call that number and ask for the YouTube links. You guys have 2.5 more minutes. And what I remember, Khadija, you were also not present in the last lecture, right, Khadija? Khadija, yeah, this is horrible, like just horrible when the students don't answer. What is this behavior? Like when I ask something, you cannot, what are you doing something else? No, sir. So why you can't turn the mic on and I have to ask everything I have to ask 2 times? You're not present, right, Khadija? I'm here. No. In the last lecture. Last, I was there. I was sending. No. No one, Rashita. Only you were present in the last lecture, right? I guess. No, sir, I was not the only one. Okay. You were there. Okay, fine. Khadija, so I hope you can do this, right? These questions. Yeah. Take it. Okay. Sorry, I messed that up. I think I remember some other class.
Okay, 5 minutes are over. Please stop writing and send me whatever you have done till now. Okay, what happened? Charishita has sent me. Khatija, why you have not sent the answer? Yes, Khatija, where is your answer? Okay, I think. अच्छा आप एक लास्ट कर रही हैं ऋषिता, राइट? यू डू द लास्ट वन, देन आई विल एक्सप्लेन ईच वन. ठीक है, आप एक करके भेजिए, देन आई विल एक्सप्लेन. This is what I am saying, Khadija. So what happened? Why you have not sent the answers? I'm doing it. I told you whatever you have done. I have given you 5 minutes. Right? What were you doing in the 5 minutes? Send me whatever you have done. You know what? It has been 1 more minute. It has been almost 3 minutes since I asked for the answers. Khadija, I have still not got your answers. Now, how would I like? Why would I think that you are serious for in this class? Why would I think that? The teacher is asking for the answers since 3 minutes and you have not sent it. Anything. आप blank page भेजिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं था. ठीक है? Why should I think that you are serious in this class? And why should I even acknowledge that you are present in the class when you are not sending me the answers? Unsaturation में आपने गलत कर दिया ऋषिता. लास्ट वाले सवाल में तो कम से कम ठीक है. This is some mistakes you are doing. I don't know why it is happening, Rishita. Please go back to the notes, I would say, again and again. See here. Rishita, keep your mic on. Stop writing. Leave your pen. Leave your pen. Tell me. What is the functional group in the fifth structure? Tell me. I mean, जोर से बोलिए. आपको डरने की जरूरत नहीं, जोर से बोलो. हमको उससे नहीं है, बंदा अगर जोर से बोल रहा है हमको ये जवाब आना चाहिए जी. yes, sir. Aman. हाँ, I mean NH2, right? Yes, sir. Unsaturation. En. Very good. Double bond.
That is why it will be En. And so अब parent की जब बात आएगी, we'll have to look at the, tell me what terminals. Terminal. No, terminals. A terminal, B terminal, C terminal. Is there any more terminal? No, sir. No, right? No. Okay, just a second. So from which terminal should I start? Tell me. A, B, or C? From B. You're getting my point. Yes, sir. And you have written there is a D terminal also. Is there any D terminal? Tell me. No, sir. Is this a carbon atom? Tell me. No, NH2. Why are you doing this mistakes then? And then I will go towards D. That's it, correct? Rishita, see here, please. If you are correcting it right now, please don't correct it now. I've asked you to leave your pen aside. Okay, leave your pen aside, please. Focus here. So what will be the parent? We have 4 carbon atoms. This will be what? Bute. The next question, functional group is? COOH. Then oic acid. Acid. Unsaturation? Double bond. En. So, I got it. Just so that हम आंसर सब पेपर देखते थे फिर से. हाँ, बट आपने ना ये नहीं किया है. You should highlight the parent chain also. ठीक है, parent आपके पास. I think you have done this one. This is your functional group. और जब भी unsaturation मिले ना तो उसको blue से ही कर लिया कीजिए. So both of these are going to be present in the parent, right? So we'll have 1, 2, 3, 4. यही क्या आपने ये सुनो? हर्षिता? Yes, sir. Bute. Now here the functional group is OH. It will be all. Unsaturation is En. Sorry, unsaturation is double bond, so it will be En. Now the parent. अब थोड़ा सा यहाँ पे OH को आपने highlight कर लिया, and then this a double bond will be highlighted in blue. ठीक है? So I have to start from, obviously double bond हमको लेना ही है, and I have to cover which the carbon which is containing the functional group. Then I will go down because we have more carbon atoms, and then I will go right or left because both of them are having same number of carbon atoms. ठीक है? This will be my parent. अब आपके पास numbering अगर हम, if I count it, it will be, my bad. Yes, sir. 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, and 6 carbon atoms. So नहीं, ये वाला आपने गलत किया हुआ. See, you stopped here. आप terminal पे आपने terminal नहीं identify किया, right? If you would have identified the terminal, you would have written here, this is a terminal, this is a terminal, and these two are terminals. ये terminal है ही नहीं. Yes, sir. ठीक है. हम क्या ही बोले आपको. तो मतलब ऐसी चीजें जो हम लोगों ने नोट्स में लिखी हुई टर्मिनल टू टर्मिनल से करना ही करना है. अब उन चीजों में अगर मिस्टेक करेंगे तो मतलब कैसे ही ठीक होगा वो. चलिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट? CO, that means it is own. Unsaturation, it is double bond, it will be En. Now other thing is रिश्ता, इसमें दिक्कत ये है in the IUPAC nomenclature, अगर आपका एक चीज गलत हो गया तो पूरा नाम गलत है. The whole name is wrong, you cannot do anything, है ना. तो मतलब मिस्टेक्स के मार्जिन बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो प्लीज उसको ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि आपने फंक्शनल ग्रुप सही लिखा तो आपको हाफ मार्क्स ही मिलेगा. विल नॉट गेट एनी मार्क्स. ठीक है, तो इसको ये आना जरूरी है इस वजह से, बिकॉज देयर आर मेनी क्वेश्चन इन व्हिच यू विल बी गिवन द नेम और फिर उस नाम से आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा. सो फ्रॉम नेम टू स्ट्रक्चर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस जस्ट हाईलाइट फ्यू थिंग्स. सबसे पहले तो वी विल हाईलाइट दिस डबल बॉन्ड O एंड देन वी विल हाईलाइट दिस En पार्ट. अब उसके बाद ऑब्वियसली इफ एन अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए तो आई विल गो टुवर्ड्स द कार्बन व्हिच इज पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड दिस विल बी माय पेरेंट. एंड आप सी once again you have not completed है ना, टर्मिनल से टर्मिनल आप नहीं गए.
ठीक है, तो ये मिस्टेक तो तब होनी चाहिए थी जब हम नहीं लिखाते इस चीज को कि टर्मिनल से टर्मिनल जाना है ना, और आप अभी भी यही मिस्टेक कर रहे हैं, सेम थिंग्स। if you have done the same mistakes, खैर चलिए अब तो खत्म ही हो गया सवाल। Now this will be cyclohexane or 9th one is your correct। 10th वाले में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती थी, I can understand that the functional group is CN, so it is nitrile। Rishita, were you saying something? Yes, sir. For the eighth one, shouldn't we start with the double bond O because that's a functional group? Wait a second, I mean why you even are asking that, I don't understand। इसको हमने एक बार डिस्कस किया हुआ है आपसे अभी जस्ट। पेरेंट कार्बन, राइट? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग रिगार्डिंग पेरेंट? क्या देखते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हाँ Terminal to terminal. should I explain more or you got your answer? But that is, oh, okay. Yes, sir. I got it. No problem। मैं बस एक बात कह रहा है कि थोड़ा सा आई मीन यू जस्ट रीविजिट व्हाट यू आर डूइंग, है ना, उसको बार बार आपको एक बार ठीक से फिल्टर आउट करना पड़ेगा, ठीक है? एवरीथिंग इज देयर इन द नोट्स एंड यू आल्सो नो एवरीथिंग, है ना, मतलब हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है ना ऋषिता? वो आपको ध्यान में आ ही जा रहा है, बट वो जब आप सवाल कर रहे हैं मे बी, मतलब स्कूल में हुआ है क्या ये आपके? A lot of times. सॉरी? A lot of times. Sir. नहीं, हम ये पूछ रहे दिस IUPAC nomenclature, is it done in your school? No, we are still in chemical bonding. So you're still in chemical. Yeah, we started the sigma and pi bonding. अच्छा, you have sigma and pi bond now? Yes, sir. अच्छा, how like तो thermodynamics अच्छा thermodynamics खैर आपके यहाँ भी नहीं, आई थिंक, और organic chemistry सीधा हमको chemical bonding को दिया जाए। तो how are they planning to complete? They will complete, I mean schools का क्या ही है, वो तो तुरंत कंप्लीट करेंगे, उनका जब मन करेगा कंप्लीट करने का। Now in this unsaturation we don't have anything, so we will write nothing, and that is why it is going to be En। ठीक है? Now if I see the parent chain, now this parent chain, अब देखिए यहाँ पे टर्मिनल्स की जब बात आएगी ना, प्लीज we are going to start from the carbon atom, which is, see this is a terminal, right? This carbon atom is a terminal, so I will start from here because it is a functional group also and it is a terminal also, so I will start from here। ये बात समझ में? I think this is why you are getting confused। कभी-कभी क्या हो रहा है that the parent is starting from the functional group itself, but it is happening only when the functional group is in the terminal carbon, as we have seen here। ये जो हमारे पास ओइक एसिड वाले केसेस है ना, so we are starting from this functional group। Why? Because it is a part of a terminal, that is why we are starting from here। Otherwise the criteria is that it should include, the parent should include the carbon atom which is having the functional group, है ना ऋषिता? Yes, sir. ठीक है, तो शायद यहां से आपको कंफ्यूजन हो रहा है that you should start from the functional group। You should not start, you should start from a terminal, but that parent then should contain the, now अब जब functional group ही terminal carbon है, then we will obviously start from here and we will move on like this, and as soon as I got a branching I will see where we have more carbon atoms, so we have more carbon atoms here, and then I will stop here। अब आपका एक सवाल होगा, सर this is to not a terminal carbon, right? This is not a terminal because in the right side also we have carbons and the left side also we have carbon atoms, right? But now we are stopping because if I am going to include the ring, because इसके बाद हमारे पास क्या आ चुका है, we have got a ring, right? I have got a ring। Now it will be problematic to name it because अब कैसे नेम करोगे? If you are not going to name the, अगर आप ring, अगर आप बताना चाह रहे हो ring है, then you will say cyclo, then what you will say, the number of carbon atoms। You cannot say cyclohex and then you have 1 2 3 cyclohex prop, ऐसे तो नहीं बोल सकते, right? So you either have this, sorry, cyclopent, you cannot have both the things, right? Cyclopent as well as C। So you have to choose which one is going to be the parent chain, either the ring will be parent or the chain will be parent। So in this case, since the chain is having functional group, so obviously chain is going to be the parent carbon chain, even though the cyclopent is having larger number of carbon atoms, that doesn't really matter। So parent carbon is having how much? 1 2 3 carbon atom, that is prop। Okay, now in this case obviously my functional group is OH and there is a double bond also which is here। Yes, sir. Functional group is OH, which will be all। Unsaturation is the triple bond, my bad, this triple bond which is going to be triple bond, which is going to be what? YN,
Yeah, parent. So I will start from the carbon which is nearest. This is a terminal carbon, so I will start from here and moving on like this towards the triple bond, right? Because obviously, if we have a triple bond, we have to include it. 1, 2, 3, 4, 5, and 6 will be X. But unsaturation तो आपने गलत लिया था, A लिखा था. I don't know how you did that. I meant to write YN, but I don't think. अच्छा, fine, no problem, होता है. Khadija, आपको समझ में आया mistakes? You have a lot of mistakes, I can see. Khadija, did you get your mistakes? Yes. ऐसे तो यार काम चलेगा नहीं मेरे क्लास में. If you are not going to speak, इतना कम अगर बोलेंगे तो. Yes. Please note it down. Raise your hand once you're done. Whatever mistake you are having, 9. क्लासेस हो चुके हैं. मिस्टेक्स आई एम रियली नॉट एक्सपेक्टिंग मिस्टेक बिकॉज जो C1 में क्लासेस हो रही इन दैट पीपल आर डूइंग वेल एंड गुड. मतलब वहां पे तो मिस्टेक्स ऐसे नहीं हो रहे. आई एम टीचिंग द सेम थिंग इन बोथ द क्लासेस. थोड़ा ध्यान से करें बस. अब क्या बोले और अच्छी क्लास में भी सी वी हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग एंड द क्लास इज ऑलमोस्ट ओवर. 1 घंटा होने वाला है. विदाउट लुकिंग यू गाइस हैव टू रिपीट ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, है ना. इतने सवाल कराने का मकसद ही यही है कि आप लोग घर जाकर इसको दोबारा प्रैक्टिस करें. Rija, let me know once you're done writing. Or maybe Khadija, if you have to write a lot of things, you take a screenshot. I wrote it, sir. So you wrote it, okay. Now parent is also done here, लेकिन अभी भी ना आप लोगों का parent ठीक हुआ नहीं है. You guys are still doing mistakes. So अब आपकी जिम्मेदारी इसको ठीक करना. I am not going to teach anymore. मतलब हम अपनी जिम्मेदारी अपने आप से हटा लें. ठीक है. Whatever you feel, ये मास्टर पढ़ा नहीं रहा है, but I think I have done enough of questions to deal with the parent chain. And if you are still doing some mistakes, then वो आपको practice की जरूरत है बस. वो क्लास में नहीं होगी practice अब. ठीक है. So we have already seen how selection of parent chain, and we have done how many questions? Around 10 questions, 11 questions only on parent chain. And now your work is to repeat the same things. Whatever I have done in the class, आपको उसी को repeat करना है, and you see what like where you are getting mistakes, कहाँ गलती हो रही है आपको, रिंग आप नहीं कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, सारी चीजें आप देखेंगे. ठीक है. चलिए. After this, we are going to write substituent. Substituent. Okay. Now in substituent, what is substituent? First of all, anything. Please write this with me. Anything that is left after the identification of puff is a substituent. Khadija, what is puff? सॉरी, जोर से बोले प्लीज. हाँ, वेरी गुड. ठीक है. हाँ ठीक. चलिए, बहुत अच्छा. हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप आंसर करते हैं. ठीक है ना. हम भी चाहते हैं सारे बच्चे करें. और फिर देखिए, जो हमको गुस्सा आता है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों पे आता है
जो कि जवाब नहीं देते, ठीक है ना। आप गलत अगर जवाब दे रहे हो तो उस पर उतना आपको ये नहीं, उस पर काम किया जा सकता है, राइट। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट मिस्टेक्स यू आर। सभी से मेरी रिक्वेस्ट यही है, एंड आई हैव बीन टीचिंग, अब तो बहुत दिन हो गए आप लोगों को पढ़ाते हुए, एंड आई थिंक कुछ बच्चे अभी नहीं आए, बट आई थिंक ऋषिता बहुत पहले से पढ़ रही है। तो हम रेयरली डांटते हैं किसी को, ठीक है ना। द ओनली टाइम आई गेट एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट आंसर, ठीक है। और ना ही हमको डांटने, हमको तो मेरा तो बस ये लगता है कि अगर कोई हमको जवाब नहीं दे रहा क्लास में, हम लर्निंग को बोलते हैं वो प्लीज भाई मेरे बैच से ही हटा दो उस बच्चे को। वो बच्चा जब तक मेरे बैच में रहेगा मेरा मिजाज खराब होता रहेगा, उसके वजह से दूसरे पे भी थोड़े कुछ ना कुछ, रिश्ता पे कुछ ना कुछ, आप पे खदीजा कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ही ना, अगर हम गुस्सा होंगे तो। मतलब टीचर ऐसा चाहे ना, टीचर आपको कुछ ना पढ़ाए और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर बैच खराब होता है तो उसमें सभी को नुकसान होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो खराब बच्चे उनको नुकसान होता है। अगर बैच अगर खराब हो गया, जवाब नहीं दे रहे अगर बच्चे, या तो फिर हम छोड़ दें फिर उन बच्चों को, भाई आप लोग आओ क्लास में, मतलब रहो माइक ऑफ करके, बस आराम से जाओ घर जाओ, और सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ हम डील करें जो जवाब दे रहे हैं, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक तो ये, अदरवाइज जब मिजाज खराब होता है तो फिर हम, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, बच्चों को क्या ही पता क्या है पोर्शन में, क्या है पोर्शन में नहीं, है ना। प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, अदरवाइज वो तो हम बोलेंगे, मतलब लर्निंग बैच में आइडेंटिफाइड अ फ्यू स्टूडेंट्स कि भाई इनको प्लीज है, मतलब मेरे बैच से हटा दीजिए, कहीं और इसको शिफ्ट कर दीजिए किसी और टीचर के साथ, मतलब हम तो वो नहीं पढ़ा पाएंगे। और फिर या तो फिर वो रिकॉर्डिंग्स देखें, क्लास में ना आए मेरे, सिंपल सी बात है। चलो, सो एनीथिंग दैट इज लेफ्ट आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए एक हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा मॉलिक्यूल दे रहे हैं, बट आप घबराइएगा नहीं, और ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है हमको पढ़ाने में, ठीक है। चलिए देखिए, so 1 2 and suppose we have 5, इस तरह से हमारे पास है। And then here we have NH2, here we have let us suppose Cl। अभी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग देखिए सिर्फ, ठीक है ना। यू गाइस जब हम बोलते हैं ना, अगर आप जो हम बोल रहे बस वो करते जाइए, आपको कोई मिस्टेक्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, यू जस्ट लुक एट इट, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बट आई थिंक यू गाइस कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप हियर। कैन समवन टेल मी, प्लीज turn your mic on, tell me what is the functional group, what is the functional group here? No idea, फंक्शनल ग्रुप के बारे में किसी को नहीं पता, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप हियर? Highlights. हैलाइट्स, हैलाइट्स है कहीं पे फंक्शनल ग्रुप पर रिशिता? लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप में हैलाइट्स है कहीं? देखो आप, Oil. ऑयल हैलाइड में सी डबल बॉन्ड ओ नहीं आता है, वो सी डबल बॉन्ड ओ से स्टार्ट होता है, उसके बाद ऑयल हैलाइड आएगा। सी डबल बॉन्ड ओ तो खोजो पहले, ठीक है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें, पता है कौन है फंक्शन ग्रुप फिर यहाँ पे? और OH. इट्स वेरी सिंपल थिंग्स, ठीक है ना। अब पता नहीं है, यू हैव डन द प्रैक्टिस टुडे आई गेस, राइट? आज किया आपने रिशिता? Today and last Thursday. टुडे एंड लास्ट थर्सडे? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप आज भी करेंगे प्रैक्टिस क्लास के बाद, आप कल भी करिएगा प्रैक्टिस, तब जाके आपका ठीक हो। ये गैप रहेगा अगर, यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वोलेटाइल? वोलेटाइल का मतलब पता है? बताएं। Very reactive or flammable. नॉट रिएक्टिव, दीज आर सॉल्वेंट्स, मतलब लिक्विड्स होते हैं ऐसे जो तुरंत उड़ जाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल यू हैव sanitizers, right? If you open the bottle and keep the bottle open, then it is going to like go vanish in the sense कि ये हो जाएगा आपका, मतलब उड़ जाएगा, right? It will evaporate very easily. So these are the things which evaporate very easily. Okay. So same thing, organic chemistry में जितने भी solvents होते हैं ना, whatever organic chemistry solvents you have, they are very volatile, and the subject organic chemistry is also very volatile. Until unless you pressurize yourself on organic chemistry, you have to put the pressure. उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, it will vaporize easily. अगर आप याद करें the first chapter is what? Some basic concepts. मोलैरिटी का फॉर्मूला आप भूल भी जाएं, हम थोड़ा सा ऐसे बता देंगे बस आपको, राइट? दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको याद आ जाएगा, फिर आप न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे, बिकॉज इसका बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड मैथ्स है,
केमिस्ट्री तो यहाँ पे खत्म जो हो जा रही है ना, राइट? सो अगर हम थोड़ी सी चीज याद दिला दे तो आपको आराम से हो जाएगा। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द होल थिंग इज केमिस्ट्री, जो कि आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग दैट, ठीक है? तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको खुद प्रेशराइज करके अपने अंदर समा के रखना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल वेपराइज वेरी इजीली। सो द ये चीज आपको आई होप होते हुए दिख रहा है। आप ये ना समझे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड है, आप ये समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नया है एंड आई हैव टू डू इट डेली, अदरवाइज ये हमको होगा नहीं। और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी आसान हो जाएगी आपके लिए, बिकॉज आप देख रहे हैं ना, मतलब कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है यहाँ पे, यू डोंट हैव कॉम्प्लिकेशन, छोटी छोटी चीजें हैं बस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को काउंट करना, छोटी छोटी चीजें, ठीक है? चलिए, तो फंक्शनल ग्रुप हियर इज OH, which is all. Unsaturation, you can see that there is a double bond which is En, and if I include the because double bond यहाँ पे, and if I include this whole thing, then this is my parent. Now there are a few things which are remaining. Just a second. We have this part remaining that we have not identified. ना वो color नहीं हुआ है, मतलब कि हमने उसको identify नहीं किया. This part is remaining to be identified. Similarly, we have this part which is remaining to be identified, right? And then we have further these two things which are going to be, which are yet to be identified. We have not identified this, and also we have not identified the NH2, है ना? इसको हम लोगों ने नाम में अभी तक include नहीं किया है. So whatever is remaining, all of these are what? All of these are substituent. All of these are substituent. और substituent होते हैं आपके पास दो किस्म के. So these are the substituent which are having only carbon and hydrogens. इनको हम बोलते हैं alkyl substituent. So substituent which have only carbon and hydrogen. Okay, you don't have to write this. अभी देखिए सर. And then we have these two, जो कि आपके Cl और NH2 है. Cl और NH2 है जो, these are known as the non-alkyl substituent और the others हम जिनको बोलते हैं non-alkyl substituent, डाल देंगे non-alkyl substituents, ठीक है? चलिए इनको जरा लिख लीजिए प्लीज. Raise your hand once you're done. Okay, चलिए. Now you will write that substituent जो होता है हमारे पास दो किस्म के होते हैं ना. So you will write that now. Substituent, oops, wait a second. Substituent. We have alkyl substituent. Then we have non-alkyl substituent. ठीक है, so alkyl substituent क्या होते हैं?
carbon and hydrogen only. Contains carbon and hydrogen only. Carbon and hydrogen के अलावा इसमें कुछ और नहीं होता है. Then what do we have? We have the next one, that is non-alkyl substituent. So obviously, non-alkyl substituent, if they are atoms, or they will be either atom or group of atoms other than alkyl. Alkyl के अलावा बाकी सारे, ठीक है ना? Alkyl के अलावा बाकी सारे हो जाएंगे. चलिए नेक्स्ट देखिएगा प्लीज. यहाँ पे लिख लीजिए जरा, नेमिंग ऑफ alkyl substituents. First we will look at the naming of alkyl substituent, फिर हम लोग non alkyl देखेंगे. Naming of alkyl substituent. ठीक है. There are two steps for this. You will count number of carbons in substituent. Second, use the terminology same as that of parent. Just add YL at the end to show that it is substituent. To show that it is substituent. ठीक है. देखिए, you have number of carbon atoms. फिर उसके लिए सब्सिट्यूएंट में आप क्या लिखिएगा, एंड देन व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबली द स्ट्रक्चर ऑफ इट. ठीक है ना, स्ट्रक्चर क्या होगा उसका. सो नंबर ऑफ कार्बन एटम इज आइदर इट इज 1 कार्बन. इफ यू हैव 1 कार्बन देन द सब्सिट्यूएंट नेम विल बी 1 कार्बन के लिए होता है मेथ और यू विल ऐड YL. सेकंड 2 कार्बन के लिए होता है एथ, यू विल ऐड YL. 3 कार्बन के लिए होता है क्या, प्रॉप, यू विल ऐड YL. हाँ, दिस इज द सब्सिट्यूएंट नेम. ठीक है. अगर सब्सिट्यूएंट में आपके पास 2 कार्बन 3 कार्बन आ जाए, 4 के लिए आप लिखिए क्या होगा, ब्यूटाइल पेंटाइल्स लिखिए 4 5 6 7 8 9. ठीक है. स्ट्रक्चर में यू कैन आइदर सी मिथाइल एज CH3 आएगा. ठीक है. एंड इसके लिए आप देखिएगा CH2 CH3 हो सकता है, और इट कैन बी C2H5 C2H5, है ना, वगैरह वगैरह. सो प्लीज कंप्लीट द सब्सिट्यूएंट को प्रोपाइल ब्यूटाइल ऐसे करके. Let me know once you're done writing this whole thing. If you are getting confused somewhere, then you will let me know.
Let me know once you're done writing. If you have doubt, if you are getting confused somewhere, please let me know. So, the structure of propyl, will it be CH2, CH2, CH3? It will be CH2, CH2, and then CH3. है ना ऐसे करके. You don't have to do this whole thing, okay? If you are done writing with the substituent, you don't have to write this whole thing. ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. But done till here, that is fine. उतना हो गया? Yes, sir. चलिए ठीक है. You write one more point just. If the alkyl substituent is a ring, then just add cyclo before the name. ठीक है. चलिए. I don't have much time अभी उतना ज़्यादा नहीं है तो we cannot do some questions we can कराना चाहते हैं. But छोटा सा सवाल एक करके then we are going to end this class today. ठीक है. चलिए. So for example, if you have something like this, so functional group is going to be nitrile, right? And unsaturation is going to be, tell me what will be the unsaturation? AN. AN. Now to start parent, I will start from the nitrile because it is one of the carbon which is terminal carbon, है ना? Or we will go towards the longest carbon chain end to end. So parent we have got it as 1, 2, 3, 4, 5 carbon atoms which will be paired. Now what is remaining? This is remaining. This is remaining, right? So what is this? This is one carbon atom, है ना? यहाँ पे आपके पास is a bond, and bond के बाद you don't see any atom. So this atom will be what? This atom will be carbon atom. And how many carbon atom? How many carbon atom? One. अगर one carbon atom है तो इसको क्या लिखेंगे बताइए? What is the word for one carbon atom? जोर से बोले, जोर से यार. आप डरे रहते हैं रिश्ता आगे गलत हो जाएगा. Speak loudly. झटके से बोल मिठाई. साफ साफ बोले. Keep your mic on for a while and until unless I recognize that you have spoken, keep your mic on. बोले. Meth होता है एक कार्बन के लिए, right? And we add YL to show that it is a substituent. याद आया? Yes, sir. बस हो गया. अब बस नंबरिंग बाकी है. नंबरिंग हम लोग सीख लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बचाया. ठीक है. तो